Hi guys, welcome back to the new session. इस सेशन में we'll talk about how do we configure console authentication and VDPI authentication. So basically in short, console पे पासवर्ड कैसे लगाएंगे और टेलनेट के लिए हम कैसे VDPI कॉन्फ़िगर करके उसे ऑथेंटिकेट करने के लिए कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे. So without wasting any further time, I will switch to GNS3. So let me just quickly launch my GNS3. तो मैंने टाइम बचाने के लिए I've already launched my GNS3 on the VM. So let's get started. Alright, so for an example, इस पे हम लोग एक layer 2 switch ले लेते हैं और एक router ले लेते हैं. We'll take router or maybe we'll use router as a PC actually, right? So इस पे configuration show करना थोड़ा आसान हो जाएगा. तो okay, so let me quickly change the symbol so that aesthetically थोड़ा सा better लगे और थोड़ा समझने में आसान हो. So maybe I'll take as client, maybe red one. This looks better. Yeah, and switch को भी हम लोग एक बारी let's change the symbol. Okay, let's take a blue square one. This looks good. Perfect. So let's make some connections. Ethernet 0x0 to fast Ethernet 0x0. दो ports आ गए हमारे पास. Perfect. And let's give एक IP सोच लेते हैं, decide कर लेते हैं maybe on the same network. So maybe this one is 1.1.1.10 and maybe this one is 1.1.1.1. ठीक है, चलो अब लेट मी क्विकली कॉन्फ़िगर. हम लोग पहले कॉन्फ़िगर करते हैं. चलो पहले पीसी ओपन कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट बोथ डिवाइसेस. मे बी लेट्स टेक कंसोल. मीनवाइल हम इसका भी कंसोल ले लेंगे सो दैट मे बी अगर इसको टाइम लेना होगा तो थोड़ा सा स्टार्ट होने में तो दिस विल स्टार्ट इन अप. Perfect. So basically this router 1 is basically a client. So oh, it's already powered on, so probably that's the reason. Let me just quickly stop this device. Client. Start it again. अंदर से भी रीनेम कर सकते थे बस जस्ट टू शो यू गाइस. रीनेम वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अभी देख लेंगे. ऑलराइट. ओके, तो क्विकली आईपी असाइन करते हैं इसको. फास्ट ईथरनेट 0x0 IP address 1.1.1.1. Let's take class A, right? No shit, exit, right? इसका IP assign कर दिया है and we will assign IP to the switch as well. अब बोलोगे यार switch को IP कैसे assign करते हैं? Let's try it, right? Interfaced Ethernet 0x0 IP address. See, there is no command of IP address, right? तो switch में L2 switch में कैसे IP assign करते हैं? तो basically L2 switch में हम लोग चाहते हैं interface VLAN 1 IP address 1.1.1.10. हालांकि इसमें हम लोग नो शट डाउन नहीं देते हैं बिकॉज स्विचेस ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं सारे इंटरफेसेस के. बट अगेन आप देखोगे दिस इंटरफेस हैज़ बीन सेट टू अप. ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट हम प्रॉब्ली विल
डिस्कस इन लेटर वीडियोस, राइट, कि हमने ऐसे इंटरफेसेस में वीलैन में कैसे आईपी दे दिया, बट अगेन बिकॉज इट्स L2 स्विच. तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू मेंशन, आई विल एक्सप्लेन दैट. सो ओके, हम एग्जिट करते हैं कॉन्फ़िगर इंटरफेस से. बेसिकली वीलैन इंटरफेस से उसमें आईपी सेट किया है. तो अब फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, हम लोग पहले कंसोल में जाएंगे, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू लाइन कंसोल 0. अब यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा आपको. मे बी विल टेक पासवर्ड एज सिस्को, राइट. नाउ देर आर टू वेज. इधर यू create a login so that वो एक local login करेगा. We'll create a username in this one, right? So let's create some usernames. Okay, let's create username first. Username admin1, password 123. Let's create one more user, admin2, password maybe 456 for this one, right. Let's go back to the console, line console 0. Let's give password again Cisco, and we will use login. Instead of login we will use login local, right. So जो username हमने database में users बनाए हैं दो, will use those two usernames to log into the switch. Okay, all right. तो ये basically हमारा console configure हो गया. If you want to see it, show running configuration, आप यहाँ पे देख सकते हो. कंसोल्स के लिए देर आर टू यूजरनेम admin1 with password 123 and admin2 with password 456, right. Okay, अब हम लोग जाते हैं let's create telnet के लिए. तो we'll go to configure terminal, वापस जाते हैं, right. So this time it would be okay. line में पहले हमने console configure कर दिया है. Now we'll have to kind of a virtual terminal हमने create करने पड़ेंगे. telnet या SSH would be covered in the next session, but again for this one telnet के लिए हमें VTY configure करना पड़ेगा. तो with this one we'll configure VTY. अब VTY के if you see there are 0 to 4, it means we can have 5 concurrent users log in to this particular switch, right. So 0 to 4, right. Let's give password is Cisco, and यहाँ पे जो हमने username पहले बनाए थे we can still use those username for login, right. So we'll use login local. That is it, right. Let's exit it. We'll go to the client. अब हमें let's test the telnet. हम telnet कर पाते नहीं. For this we'll use exit telnet. telnet हमें करना है switch को, that is IP is 1.1.1.10. okay, now it's asking for a verification. तो verification हमारा क्या था, admin1 and admin2 दो users बनाए थे. maybe we can use admin2 and password I guess इसका था 456. perfect. switch में login हो गया है, and as soon as you put in enable तो ये console का पासवर्ड मांगेगा because हमने console का पासवर्ड सेट किया था switch में, right. कैसे पता लगेगा, I'll show you. show running configuration. There it is, line console 0 and the password is Cisco, right. This is not an encrypted password, probably we'll take that later, but again just to show you कि हमने यहाँ password set किया था. we'll go to client again, let's put in Cisco. there we go. client से आपका switch आपने login कर लिया है, and you can now
configure whatever you want, right? Maybe we'll change the host name to switch, right? There's a condition like जब हम SSH पढ़ेंगे तो you cannot name switch as switch or router as router, so probably that's a condition. But again, just to show you, हम यहाँ से with the client we have taken access of switch and we can control the switch and we can configure a switch as we want. So that was all about putting the console authentication and VTY authentication. That is kind of we've used this as for Telnet accessing. In the next video, we'll show about the SSH, and I hope you like the video. In case you have any questions or concerns or comments, please do put in on the comment section. And yeah, I hope you like the video. I'll see you on the other side. Till then, take care. Goodbye. Ta-da.